Good morning, dear children. This is fourth lecture of current electricity. In this, we will be studying first topic as rheostat. You can see some pictures, practical pictures are shown in the screen. So इसमें कुछ certain parts हैं जिसको अभी हम लोग दूसरे एक schematic diagram में study करेंगे. And this you can see the first figure is the experimental figure and second figure is another type of rheostat which can be used as a fan regulator or in some hi-fi devices it is used such as a volume control device. ठीक जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे या फिर लाइट डिवाइसेस लाइट अप्लायंसेस के केसेस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट कंट्रोल करेंगे उस प्लेस पर भी हम रेहोस्टेट को यूज कर सकते हैं बट दोनों के जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन है दोज विल बी डिफरेंट. So we can see its experimental diagram in the first figure. Like there are two terminals. You can check in the figure. One is named as terminal A and another is terminal C. दोनों places आप देख लेंगे. ठीक, I am marking them by red color. And this is terminal C. Then this is the sliding contact and over here this is the wire wound. ये wire wound है पूरे cylindrical shape में isolated from each other and the third is the terminal B. ठीक, अब ये डिपेंड करेगा आपको रेहोस्टेट को किस एप्लीकेशन में यूज करना है because it can be used in two applications. One is to change the resistance and second is to change the potential difference. तो आप pairing use करेंगे. Either you can use the pair of terminal C and terminal B or you can use terminal A and terminal B. So over here we can see that terminal C and terminal B are used here. Check this, C and B are used here and in this case diode rheostat is used as a resistor changing device. ठीक, अब हम इसकी theory पढ़ लेते हैं. A rheostat shown in figure is an adjustable resistor. सबसे पहली definition है इसकी कि आप इससे resistance change कर सकते हैं. Used in applications that require adjustment of current or resistances in an electrical circuit. The rheostat can be used to adjust potential difference between two points in a circuit. जैसे हम लोगों ने फिगर में देखा था. जस्ट सी फिगर अगेन. One time it was used as the combination of terminals C and B and at other time we can use it to save the terminal A and B. तो दोनों ही cases में जब आप C and B use करेंगे then it is used to change the resistance and whenever we are using these two terminals this is to adjust the potential difference between two points in a circuit to change the intensity of lights. आपने देखा होगा जिस तरह से फैन के रेगुलेटर को रोटेट करके हम फैन की स्पीड को मेंटेन करते हैं. सिमिलर कंट्रोलिंग नॉब को रोटेट करके हम कुछ लाइट अप्लायंसेस में लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं एज वेल एज हम मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल करते हैं. जैसे मिक्सर ग्राइंडर. ठीक, you can take another example of mixer grinder in which by rotating a particular knob we control the speed of the motor. In cooler, by rotating this knob we can control the speed of fan or the speed of motor. So रेजिस्टिव एलिमेंट, अब ये किस मटेरियल से बना हुआ है? तो
The resistive element can be a metal wire or a ribbon, carbon films, or a conducting liquid depending upon the application. क्योंकि पर्टिकुलरली किस प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन में आप लेने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रियोस्टेट किस मटेरियल का बना हुआ है. एंड as we have discussed already, in hi-fi equipment, rheostats are used for volume control. ओके सो एक नॉब जैसा होगा जिसको रोटेट करके आप वॉल्यूम या फिर व्हाट एवर इज द प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन उसको हम कंट्रोल कर लेंगे. तो एक बार फिगर को और चेक करते हैं. दिस इज द फिगर. तीन टर्मिनल्स होंगे, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी एंड टर्मिनल सी. जब आप सिमिलर हाइट के दोनों टर्मिनल्स को यूज करेंगे मीन्स टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, then it will be used as a voltage adjusting device or to find the terminal potential difference. But when we are using these two terminals, like one upper terminal and other lower terminal, then it is used as a resistance changing or resistance adjusting device. So rheostat is basically a resistance adjustment device in which a metal wire is wound in the isolated turns form on an cylindrical arrangement. Okay. Next topic is the combination of resistors. As in the previous two lectures, we have studied Ohm's law as well as the limitations of Ohm's law. कि उसमें आप relationship लेते हैं that V equals to IR or the resistance is taken as V upon I. But suppose हमको सर्किट में एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस यूज करना है और हमारे पास वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है बट अदर रेजिस्टेंसेस आर अवेलेबल एंड स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है हमें उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस कैपिटल आर की, then we will adopt the method which is called as the combination of resistors. हम resistors को आपस में join करेंगे. So joining a combination of resistors to get a particular value of resistance is called as combination of resistors. So basically there are two types of combinations. One is series and another is parallel. So first called as series combination. सो इसको जैसे ही आप डिफाइन करने जाएंगे यू मे राइट द डेफिनेशन. व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक जब रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होंगे then this is called as the series combination of resistors. और आप इस फिगर से एक्सप्लेन कर सकते हैं. Suppose we are taking two resistors R1 and R2. अब resistors में हम कलर कोड पढ़ चुके हैं बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने. अगर आपको इजी बाइट्स याद होगा, this is B.B. Roy of Great Britain had a very good wife. तो रेजिस्टर्स में हम लोगों ने सिर्फ ये बताया था कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर में कि आपके पास लेफ्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए जहां से आप कलर बैंड्स को पढ़ना स्टार्ट करें, कलर कोड को पढ़ना स्टार्ट करें. बट रेजिस्टेंसेस में कोई भी पोलैरिटी नाम की चीज नहीं होती. ठीक है, ये बात का ध्यान रखेंगे. रेजिस्टर्स में आप लेफ्ट या राइट एंड तो बता सकते हैं बट पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नहीं बता सकते जिस तरह से हम एक सेल या फिर कैपेसिटर में मेंशन करते हैं. सो हमने रेजिस्टर R1 का लेफ्ट एंड एक सेल के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया एंड इसी रेजिस्टर R1 का राइट एंड हमने R2 के लेफ्ट एंड से कनेक्ट किया.
सो इस वे में R1 के जस्ट कंटिन्यूएशन में कनेक्ट हो गया R2, दैट इज द सेकेंड रेजिस्टेंस. नाउ वी हैव कनेक्टेड the second or another free end of R2 with the negative terminal of the cell. So in this way, two resistors R1 and R2 are connected in series. So आप इसको जब भी न्यूमेरिकल करेंगे सो इस वे में डिनोट कर सकते हैं वर्बली R1 series R2. Now the main thing is whenever two resistors are connected in series, the current flowing through both the resistors is same. So हम लोगों ने सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट एक्सट्रैक्ट की I and this same current passes through R1 as well as R2. अब करंट किसी भी रेजिस्टेंस में से जब पास होगी तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ this will be creating a terminal potential difference across the resistance. तो करंट I ने R1 के अक्रॉस प्रोड्यूस कर दिया V1 equals to I into R1 एंड सेम करंट I ने R2 के अक्रॉस प्रोड्यूस कर दिया V2 equals to I into R2. Now let the total EMF is V, neglecting the internal resistance of the cell or battery. Then we can assume that the total potential difference is equal to V1 plus V2. So एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज ये है 20 वोल्ट एंड आपको V1 की वैल्यू मिली 13 वोल्ट, तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट दैट V2 विल बी 20 minus 13, it means 7 volt. So whenever in the combination of two resistors, we want to find out the second potential difference or the another potential difference, we can find directly by the subtracting the first potential difference from the total potential difference. Means there is no need to apply Ohm's law again. Now we put the values. So let's assume that the total resistance offered by the combination of R1 and R2 is Rs. S subscript stands for the series. अब आपने जैसे ही यहाँ पुट किया V के प्लेस पर ओम्स लॉ से I इंटू आर एस एंड V1 के प्लेस पर I इंटू R1 प्लस V2 के प्लेस पर I इंटू R2. I will cancel from both the sides and we get Rs equal to R1 plus R2. So it gives us the verbal form of the combination of resistors in series. So series resistor is equal to the sum of the individual resistors. And also we can extend this relationship when n resistors are connected in series. So suppose R1, R2, R3 and so on Rn are connected in series with a common potential difference source. तो आपने EMF सोर्स से उनको कनेक्ट कर दिया. सबसे पहला एक कंक्लूजन होगा current through each of the resistor will be same. Each of the resistor which is offered by the cell, current is offered by the cell will be the same. Second point आता है आपके पास कि potential difference will be depending on the value of resistance. Over here we are taken different resistors, so the potential difference will be V1 equals to I R1, V2 equals to I R2. Similarly, V3 equals to I R3 and V4 equals to I R4. So finally हम फिर से जब इसको प्रूव करेंगे so this will give us Rs equal to R1 plus R2
प्लस R3 प्लस R4। ठीक, अब चारों रेजिस्टर्स को ऐड कर देंगे। सिमिलर वे में when n resistors are connected in series, we get Rs equal to R1 plus R2 plus R3 and so on plus Rn। ठीक, अब नेक्स्ट कंक्लूजन है whenever we have to increase the equivalent resistance, जब हमें equivalent resistance को बढ़ाना होगा तब हम यूज करेंगे series combination। And suppose in this case, in this particular case, if all the resistors are identical, means सबकी वैल्यू सेम है। सो फॉर एन combination of all identical resistors, each of value r, and they are in total n identical resistors, we will get Rs equal to r plus r plus r and so on n times. So this will be equal to n into r. So series resistance connected by n identical resistance will be giving us the equivalent resistance of nr in the circuit. So इस पर छोटे छोटे से एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। Let 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm connected in series, then what is the equivalent resistance? So obviously this is just the sum of all three resistors, so it is equal to 10 ohm। ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का। लेट 10 resistors of 5 ohm each are connected in series, then what is the equivalent resistance? R equivalent unknown है. So as we know, when n resistors of identical value are connected in series, then we have the answer Rs as n into R. So since number of resistors is 10 and the value of each resistor is 5 ohm here, so we can have Rs equal to 10 multiplied by 5 ohm. So this will be giving us answer as 50 ohm। ठीक, तो इनसे फिर से प्रूव हो गया कि जब भी आपको नेट रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बढ़ानी होगी तो आप यूज करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में से हर रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाली करंट ऑब्वियसली हमेशा सेम होगी, but the voltage difference according to Ohm's law will be depending on the value of each resistance. Now we are going to study the next combination of resistors, that is the parallel combination। So you can see in the next figure, this is the parallel combination। So सबसे पहले हम definition देख लेते हैं। Two resistors are said to be in parallel if one end of all the resistors is joined together। सभी resistors का एक end हम एक साथ join कर देंगे and similarly the other ends joined together। जैसे आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं R1 एंड R2, दोनों के 2 फ्री एंड्स हैं। तो R1 एंड R2 के लेफ्ट एंड्स को आपने इस पॉइंट पर एक साथ ज्वाइन कर दिया एंड अगेन R1 एंड R2 के राइट एंड्स को आपने इस पॉइंट पर एक साथ ज्वाइन कर दिया। अब इस कॉम्बिनेशन के साथ हम एक EMF सोर्स कनेक्ट कर देंगे in this way। So EMF source of V will be creating a current extracting from the positive terminal of the cell।
सो जैसे ही ये करंट ए पॉइंट से फ्लो होकर इस जंक्शन पर पहुंचेगी, दिस करंट आई will be divided into two parts I1 and I2. अब डिपेंड करेगा कौन सा रेजिस्टेंस कम है. So you have to determine first which is the less value of resistance according to Ohm's law. The current flowing through that resistance will be more. सो इस एग्जाम्पल में आपको किसी एक रेजिस्टेंस को कम एज्यूम कर लेना होगा. सो लेट वी एज्यूम R1 इक्वल्स टू 5 ओम एंड R2 इक्वल्स टू 10 ओम. तो एज्यूम कर रहे हैं, दिस इज जस्ट आवर एजम्पशन. तो जैसे ही R1 में से करंट I1 जाएगी, that will be double to that of I2. I1 will be double of I2 because resistance of R1 is less, that is half. यहाँ भी आपको combination मिल रहा है. R1 by R2 is equal to 1 by 2 because 5 by 10 हो गया. बट ये क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में आपको कभी भी जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स मिलेगा वो सेल के ईएमएफ के इक्वल ही होगा, प्रोवाइडेड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज नेग्लिजिबल. बट अगर सेल कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करती है, तब हम लोग ऐसा स्टेटमेंट पास नहीं कर पाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल. ये बात का ध्यान रखेंगे. ठीक. सो जब भी आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस V is going to be same across each resistor independent of their values. But यहाँ पर करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो आप डेरिवेशन की स्टार्टिंग कर सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2. अब हम मान लेते हैं कि R1 को R2 के साथ पैरेलल में लगाने पर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp मिला, where P stands for the mode of combination, that is P for parallel. सो I के प्लेस पर आपने ओम्स लॉ से लिखा V अपॉन आर पी. I1 के प्लेस पर V अपॉन R1. I2 के प्लेस पर V upon R2. This is by Ohm's law. Now from both the sides, V is cancelled. Therefore, we get 1 upon Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. आपको नेट आंसर जो मिल गया उसी को आपने जब वर्ड्स में लिखा, सच एज आई रिपीट 1 अपॉन Rp इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. तो फॉर 11th और 12th standard, just apply the formula in shortcut way. So whenever we want to take Rp in short, we get Rp equals to the product of two resistors upon the sum of two resistors. ठीक. So this is product upon sum. तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ कर सकते हैं इनका. If 2 ohm and 4 ohm are connected in parallel, find the equivalent resistance. तो आप शॉर्टकट लगा सकते हैं डायरेक्टली. कॉम्बिनेशन का नाम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें कनेक्टेड है वो. So we can get direct trick. Rp is equal to R1 multiplied by R2 upon R1 plus R2. So this is equal to 2 multiplied by 4. इस वे में आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. Divided by 2 plus 4. So this is 2 4s are 8. 2 plus 4 is 6. So it is equal to 4 by 3 ohm. ये आ गया आपके पास आंसर. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन आप तब यूज करते हैं जब आपको
रेजिस्टेंसेस की नेट वैल्यू को डिक्रीज करना हो। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंसेस across each resistance will always be same independent of the value of the resistance, but if all the resistors are different, then current through each resistor will be different। तो आपको चेक करना पड़ेगा पर्टिकुलर सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फिगर बनाऊं, दिस इज 2 ohm, it is 4 ohm, and third resistance also we are taking 2 ohm। ठीक है, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है और इसके अक्रॉस लगा दिया आपने एक सेल। तो सपोज हम इनकी नेमिंग कर दें R1, R2 एंड R3। तो जैसे ही सेल के पॉजिटिव पोल में से करंट आई स्टार्ट होगा, इस जंक्शन पर आकर करंट तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। I1 क्योंकि इस रेजिस्टेंस को हमने R1 से डिनोट किया है, सेकेंड इज I2 एंड थर्ड इज I3। अब R1 एंड R3 की वैल्यू सेम है, so current I1 will be same as current I3, but this is not equal to I2, so it will be depending on the values of current, but the voltage difference, that is the potential difference across each of the resistor will be same as V। Next important point is, if n identical resistor each of value r are connected in parallel, तो इसका भी हम डायग्राम बना लेते हैं। This is first resistor, second resistor and so on, and this is nth resistor, they are connected in parallel, each has value r, और इनको हमने लगा दिया एक EMF सोर्स के साथ पैरेलल में। सो वी गेट R equivalent equals to each resistance value divided by the number of resistor। So it is proved that the net resistance decreases when we connect them in the parallel combination। So in the summary, we will be getting Rs equal to, that is the equivalent resistance in series combination is R1 plus R2, आप डायरेक्टली ऐड कर देंगे, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन R1 एन रेजिस्टर्स के लिए, प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन, प्लस 1 अपॉन Rn। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, और एक तीसरे टाइप का कॉम्बिनेशन आप लेते हैं जिसके प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेजिस्टर्स, जिसमें आप दोनों ही टाइप के कॉम्बिनेशन को प्रोमिनेंटली यूज करेंगे, सच एज सीरीज as well as parallel। So try to understand this lecture very carefully, and in next lecture we are going to study only the numericals of series, parallel as well as hybrid